point of definition is any word when, बिल्कुल सही है, द लोकस ऑफ अ, क्या है, प्लीज रिपीट. Absolutely. See, already yesterday I was taking class in the second section of 10. See, when we have to define something, we should use the smallest possible words to define a particular topic. Here the topic is circle. Here this topic is circle. So when we have to define any topic, then we have to use smallest possible word to say something about this. Now, the circle is the locus of equidistant points from a fixed point. This locus, you will study in class 10th ICSE board, and the name of the chapter is loci. When we use it in plural way, it is loci, loci, many of the students used to say. So this is the definition of circle, and here you can also say that figure obtained by line joining a set of equidistant points from a fixed point. This equidistance, this is equidistant, this is called radius of the circle. The constant distance from center, fixed point, is called center, and the constant distance is called radius. So these two are the important thing when we have to radius and circle. Now we are moving forward. See, a circle divides the plane in how many parts? Tell me. एक सर्कल एक प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? A circle divides a plane in how many parts? बोलिए. आवाज आ रही है आपको? देखिए, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन 3 पार्ट. फर्स्ट, एक हो गया हमारा इंटीरियर पार्ट, एक हो गया एक्सटीरियर पार्ट, और उसके बाद हो गया हमारा ऑन द सर्कल. तो आपके पास टोटल 3 पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट मिलेंगे. एक हो गया हमारा इंटीरियर, एक हो गया एक्सटीरियर, और एक हो गया हमारा ऑन द सर्कल. तो आपके पास टोटल 3 हिस्सों में बटेगा हमारा. पाई ऑलरेडी आपको पता है. डेफिनेशन ऑफ पाई, वेन एवर ए कर्व लाइन इज ऑब्जर्व, दिस पाई इज डिफाइंड एज द सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. हमें अब पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट. व्हाट इज अ टेंजेंट? तो टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट that touches the circle at only one point. Tangent touches the circle at only one point, and it is perpendicular to the radius of the circle. It is perpendicular to the radius of the circle. Whereas secant is a line that passes the circle and intersects the circle at 2 distinct points. You can also say that secant contain a chord. What is a chord? Chord. It has 2 end points on the circle. What is chord? Chord has 2 end points. 2 end points on the circle. तो chord क्या होता है? सबसे बड़ा chord होता है diameter. Diameter is called the longest chord. और if we draw a circle and say कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बताओगे आप? एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बताओ. बोलो. हाँ, इफ वी आर प्लॉटिंग दिस पॉइंट P, वेट, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? I have to check whether you all are watching or not. Oh my God.